Hi everyone. I'm going to be teaching you guys linear algebra. linear algebra में मैंने इस linear algebra के अंदर जितने भी टॉपिक्स है उसको 7 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है एंड दिस इज सोली बेस्ड ऑन गेट syllabus. Alright. Okay, starting with types of matrices. Types of matrices. Okay. Now if I say types of matrices, basically there are total of 24 types. Okay, I'm going to be seeing all of that. Starting with the row matrix. Okay, before that we have m cross n. So this is the row and this is the column. Alright, so suppose we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So we have 3 rows and we have 1 2 3 4 columns. So these are columns and these are rows. Now when we have row matrix, we have number of rows and and we have one column. So basically we have columns. So suppose let's say 4 8 9. Okay, these are rows and we have just one column. Second is our column matrix. Okay, column matrix में similarly we have one column and we have n number of columns, and rows we have one. Okay, just like 4 8 9 10, we have how many columns? We have 4 columns. And how many rows? We have one row. Okay. Now null matrix. What is null matrix? Null matrix is everything is zero. You can just say aij is equal to 0. Okay. Now fourth, if you see rectangular matrix, how do we represent a rectangular matrix? Is m is not equal to n. If your number of rows is not equal to the number of columns, then we say it as a rectangular matrix. Fifth, square matrix. If m is equal to n, we call it a square matrix. Okay. Sixth, we have a diagonal matrix. Okay, in diagonal matrix what happens is all the non-diagonals elements are 0. Okay, all the non-diagonal elements are 0. Seventh, what is a scalar matrix? Scalar matrix में जो नॉन डायगोनल्स है एलिमेंट्स है वो सब 0 है, प्रोवाइडेड प्लस जो डायगोनल्स है ना is all same. I'll just give you a quick example. We have 1, right? Same. Okay, moving on. If you look at this 7 types, थोड़े बहुत similar है ये लोग. ठीक है. Now moving on to our 8th. ठीक है. I'm putting divisions like that so that याद रखने में easy हो जाए. ठीक है. Moving on to 8th, we have ठीक है, पहले ये 7 वाला मैं बता रही हूँ. ठीक है, अब मैं बताऊँगी ट्रेस के बारे में. आई विल टेल ऑल द टाइप्स बट just so that we don't get confused, I mean just so that it's not difficult for us to remember, I am going to put another topic in between which is required for the other types. Okay, we have trace of matrix.
what is trace of matrix? Basically ये जो है ना, it's represented as this or this, ठीक है. Now what is this? This is the sum of elements of diagonal. अब diagonal in square matrix. Obviously square matrix में तो diagonal होगा, right? Okay. Few properties we'll see of trace of matrix का few properties हम देखेंगे. अगर ऐसे कुछ दिया हुआ है प्लस माइनस बी, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस माइनस ऑफ trace of b. Now if we have something like this, it is equal to trace of b into a, okay, and this is not equal to trace of a into trace of b or trace of b into trace of a, not equal, okay. Third we have, if say suppose k into a, where k is a scalar, ठीक है, तो we can write it as this. Alright, A is a matrix. Okay, I hope it's clear. Now in the square matrix I would like to add one topic, which is order of a matrix. Yeah, it is applicable only to square matrix. So basically I'll just give an example. Suppose this is a matrix, say A, इसका order क्या होगा, is equal to 2. We say 6 7 8, ठीक है, इसका order क्या होगा 3. Okay, I hope it's clear. Moving on. Now we'll see some of the properties of diagonal matrix. We've seen some what's trace of matrix. We've seen one property of square matrix, which is the order of a matrix, and this is how we find. And then now we are going to study about diagonal matrix. We saw that it dealt with diagonals. This two dealt with diagonals. So we are going to see some of the properties of diagonal matrix. Okay. Let's say we have AB as diagonal matrix. Okay. So if we have something like A plus or minus of B, this is also going to be diagonal, right? We'll still get a diagonal matrix if A and B both are diagonal. Similarly, if we have A to the power of n plus minus of B to the power n, still be a diagonal matrix. If we have A transpose, okay, or B transpose, whatever, it will still be a diagonal matrix. We'll see what a transpose is in a minute. And then now since this is also diagonal matrix, this will also be a diagonal matrix. We already saw that diagonal plus minus diagonal is a diagonal matrix. So let's just extend it, diagonal matrix. Okay, now adjacent of A plus, sorry, not adjacent, adjoint of A and adjoint of B क्या होगा, diagonal matrix. We'll also see what adjoint is in a minute. Then finally we have A inverse and B inverse, ठीक है.
this will also be a diagonal matrix. ये properties diagonal matrix का है. Now ट्रांसपोज क्या है देखते हैं. ठीक है, वी सॉ यहाँ पे हमने ट्रांसपोज के बारे में देखा एंड जॉइन के बारे में देखा. नाउ लेट्स सी व्हाट अ ट्रांसपोज इज बेसिकली. ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है इज डिनोटेड बाय दिस. ओके, मतलब ये तो मैट्रिक्स है, इट्स डिनोटेड बाय दिस टी. ठीक है, ट्रांसपोज इज व्हेन m क्रॉस n को क्या कर देना, n क्रॉस m कर देना. ये भी इंक्लूडिंग दी एलिमेंट्स. ठीक है, इंक्लूडिंग द एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे, मतलब एलिमेंट्स को ही करना. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 1 2 3 4, this was our row, 2 rows, so we'll put it as 1. If this is A, so A transpose will be 1 2 and 3 4. Okay, moving on, we saw 7 types of matrices. Now coming to the 8th. ठीक है, coming to the 8th type, just unit or identity matrix. ठीक है, unit और identity matrix is basically EIJ जो है वो 1 होता है for I equal to J and 0 होता है for I not equal to J. In simple words, it will be like this. ठीक है, in simple words this. और कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, ये ऑर्डर 3 का है, थर्ड ऑर्डर का है. ठीक है, मूविंग ऑन टू 9, upper triangular matrix. Okay, what is upper triangular matrix? जो upper part है, upper part of diagonal is equal to, is not equal to 0. Okay, and lower part of diagonal is equal to 0. That's it. Now we are moving on to lower triangular matrix, which is just the opposite. So क्या होगा, lower part of diagonal is not equal to 0 and upper part of diagonal is equal to 0. ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर देखें 1 2 3, upper part of the diagonal is not 0, we can have like 2 4 8. ठीक है, यहाँ पे 0 0 0 and इसका just opposite, this is the diagonal and the lower part of the diagonal is 0. इसका just the opposite of this. 11th, okay, before moving to 11th, let's see some properties of transpose. Sorry, properties of transpose हो गया. Let's move to 11th, which is a symmetric matrix. ठीक है, it is A n cross n and Aij is equal to Aji. ठीक है, example A12 will be equal to A21.
A12 में जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे A21 की जगह का एलिमेंट्स में. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दिस इज A11, A12, A13, then we have A21, A23, then we have A31, A32 and we have A33. ठीक है, इसका मतलब ये है कि A12 और A21 इक्वल होना पड़ेगा. सिमिलरली A13 और E31 इक्वल होना पड़ेगा. सिमिलरली A32 should be equal to A23. This is what it means by symmetric matrix. And also it should be a square matrix. Okay, number of rows should be equal to number of columns. Okay, moving on to okay, so here if we have a square matrix, how do we know if it is symmetric or not? It can be symmetric. How do we know if it is symmetric, and how do we know if it's skew symmetric? So to be symmetric, if A is the square matrix, your A transpose should be equal to A, and to be skew symmetric, your A transpose should be equal to minus of A. That's it. This is necessary and sufficient condition. Alright, now we'll talk about skew matrix. So basically, what is a skew matrix? It's called skew symmetric matrix. Okay, basically, तो in skew symmetric matrix, जैसे कि यहाँ पे it's already said, so aij is going to be aji, और यहाँ पे एक और चीज़ आ जाएगी माइनस. ओके, नाउ फॉर डायगोनल, इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0. ठीक है, ओके. नाउ विल सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक. क्या राइट डाउन हियर? विल सी सम प्रॉपर्टीज. किसके? अभी हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज देखेंगे. ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक प्लस, लेट्स राइट एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, let's say A and B, and these are both symmetric. Okay, A and B are two matrices and they both are symmetric. So I'm going to divide it like this. So you have skew here, skew symmetric का column, और एक मैंने बनाया symmetric का column. ठीक है, now A भी symmetric है, A भी मैट्रिक्स symmetric है, तो skew अगर मैं बोलूँ A B माइनस बी ए ढूंढना है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा. एंड अगर मैं ए बी प्लस बी ए निकालूँ तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक ही होगा. सिमिलरली ए प्लस बी अगर मैं करूँगी, ए प्लस और माइनस बी करूँगी तो वो सिमेट्रिक ही होगा. एंड ए टू द पावर एन या फिर बी टू द पावर एन भी सिमेट्रिक ही होगा. या फिर उस ए के साथ या बी के साथ अगर मैं कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो भी सिमेट्रिक ही होगा. ठीक है, क्या है? स्केलर. बट अगर मैं ए बी माइनस बी ए फाइंड करूँ तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा. ए बी प्लस बी ए करूँ तो वो सिमेट्रिक होगा. ठीक है, नाउ ये यहाँ जो ए बी है और यहाँ जो बी ए है ना, ये ए बी है, ये ए बी एंड बी इंटू ए नीड नॉट
सिमेट्रिक, ठीक है। ये अगर सिमेट्रिक है भी, सिमेट्रिक नहीं भी है, तो भी ये जो मैंने बताया ए बी माइनस बी ए एंड will be skew symmetric and AB plus BA will be symmetric will still hold. It does not depend if individually AB and BA are symmetric or not. Okay? ये वाला पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन अगर मैं देखूँ, ए सपोज ए है एंड ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ये दोनों क्या है, सपोज स्क्वायर मैट्रिसेस है, ठीक है। तो दोबारा से ये वाला एक्सटेंड कर देता हूँ, तो क्या होगा, अगर मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दूँ तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दूँ तो ये वो क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमिलरली ए ट्रांसपोज माइनस ए कर दो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, एंड यहाँ पे ए इंटू ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए कर दो तो वो सिमेट्रिक होगा। We should know one thing, that A into A transpose is not equal to A transpose A. Both of these are different. Okay. Alright. So this is done. Now we have our third condition. Let's say A and B hai. These are skew symmetric. Suppose both are skew symmetric. Now again we are going to extend this column. Your A plus हो या A minus हो B, it will be skew symmetric, ठीक है। एंड A स्क्वायर अगर कर दो या फिर B स्क्वायर कर दो तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। टू जनरलाइज वी कैन राइट इट इज A to the power n और B to the power n where your n is equal to even, ठीक है, not odd, only even, like a to the power 2, a to the power 4, a to the power 6, similarly for B. Okay, and now here if we generalize a, to remove this, so if a to the power n and B to the power n will be skew symmetric if your n is odd. Okay, and if we multiply it, and here's one note, a b हो या b into a हो, these are not skew symmetric, but we do not know if they are symmetric or not. Maybe or may not be symmetric, but one thing for sure we know is it is not skew symmetric. Okay. Okay, so अगर ए कोई मैट्रिक्स है ना, तो जनरली क्या होता है कि लेट्स से ए इज सम मैट्रिक्स, ठीक है, वी कैन express it in this form, a plus a transpose divided by 2, ठीक है, plus a minus a transpose divided by 2, इसको ऐसे करके हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज योर सिमेट्रिक पार्ट and this will denote your skew symmetric part, ठीक है। Okay, another note, if AB are two matrices which are square matrix, ठीक है, and A into B जब तुमने फाइंड करा वो भी सिमेट्रिक निकला, ठीक है। So if these two conditions are met, we can write that AB is equal to B into A. Okay, another one, if AB is a square matrix and A into B is your skew symmetric, ठीक है, we can say that A and B जो है this commute. Okay, now
another one. If we have, say, B transpose EB, right? मतलब we have A and B as two matrices and एक मैट्रिक्स लिया एंड एक का ट्रांसपोज और एक जो बी था वही, उनको तीनों को मल्टीप्लाई करा एंड इफ़ वी गेट द आउटपुट एज सिमेट्रिक, ठीक है, इट मीन्स दैट ए इज सिमेट्रिक, ठीक है, एंड और वाइस वर्सा, ठीक है, एंड इफ़ वी गेट इट एज क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, दैट मीन्स ए was क्यू सिमेट्रिक, और we can just say vice versa as in like if A is q symmetric and this is the expression, we can say that the output will be q symmetric. Okay. Another thing, a null matrix is both symmetric and skew symmetric. Okay, it's the points to remember. These are the points to remember. An IN, which is an identity matrix, is always symmetric. Okay. Moving on to which number were we? Okay, 12. Moving on to the 13th type of matrix, which is the idempotent matrix. Okay. Idempotent matrix is basically if I say have a matrix A, ठीक है, and then again multiply with the same matrix, ठीक है, मतलब A square कर दूँ तो जो output that I'll be getting will again be A. Okay. And ये जो A है ना, जो हम matrix consider कर रहे हैं, it should be a square matrix. Okay. So then we'll call this matrix as the idempotent matrix. Then we'll call this matrix as the idempotent matrix. Okay. Now let's say if we have AB is equal to AB if we have say A and B matrix, उन दोनों को multiply करके I got A, ठीक है, और B into A कर दिया तो I get B as the output. Then what we can derive is that A and B जो है वो क्या है, idempotent है. And if your A is idempotent, then I minus A is also idempotent. I मतलब your identity matrix, or vice versa. If your identity matrix minus a matrix is idempotent, it means that this A is an idempotent matrix. Okay. Moving on to the next type, which is our involuntary matrix. Okay. Involuntary matrix क्या होता है कि if I have say A square, ठीक है, if I consider a matrix say A and A is square matrix, ठीक है, this is a condition, it should be a square matrix. Suppose I've considered A as a matrix and it's a square matrix. So if I square it, I get an identity matrix, right? Let's not confuse. So I get an identity matrix. Then A क्या है? A matrix involuntary है. It means that the matrix A is involuntary. Now, okay. Now, let's say I am multiplying it 3 times. It's A cube. ठीक है. So what we're gonna get is we are again gonna get A.
ठीक है. Then also we'll call it involuntary. So basically sum of क्या करना चाहती हूँ मैं, say a to the power n मैंने कर दिया suppose, I'll get I, ठीक है, if n is equal to even, and I'm going to get e to the power n is equal to a if my n is odd. ठीक है, this is the this is what you can derive from it. Okay, now one thing that you need to remember is if a is involuntary, suppose you have a and that a is involuntary, so अगर इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ऐड करोगे and multiply it with I minus a, identity matrix minus a, you are going to get 0. Okay. Okay, now another one, which is the nilpotent, okay, matrix. So nilpotent matrix में क्या होता है, suppose e to the power अगर मैं m बोलूँ तो you will get suppose I consider a which is a square matrix. ठीक है, this is a square matrix, तो a to the power m में कर दो तो 0 मिलेगा, given that m is a positive integer. ठीक है, m is a positive integer, कुछ भी हो मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 0, वट एवर टाइम्स यू मल्टीप्लाई यू विल गेट एज 0. ठीक है, then we will say if it's so, then we'll say that a is nilpotent. Okay, now least पॉजिटिव नंबर. ठीक है, ये m तो तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर होगा राइट, उसमें से जो लीस्ट पॉजिटिव नंबर दैट वी हैव, इट विल बी नेम्ड एज इंडेक्स ऑफ nilpotent, okay, matrix. Right, this thing you need to remember. Like whenever you are solving a question and you are asked what is the index of this nilpotent matrix, then क्योंकि m का रेंज दिया होगा तुम्हारे पास, तो m में जो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर दिया गया है वही तुम्हारा इंडेक्स होगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू orthogonal matrix. Now what's an orthogonal matrix? अगर I say I have A, ठीक है, I consider a matrix called A, so A into A transpose अगर मैं कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, A transpose A. ठीक है, क्योंकि जनरली A into कुछ भी हो इज नॉट, सपोज A into B पकड़ लिया, इज नॉट इक्वल टू B into A. ठीक है, सो यहाँ पे इन दिस केस इफ A into A transpose is equal to A transpose into A, और आई से A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे तो मैं क्या बोलूँगी, देन आई विल से दैट A इज ऑर्थोगोनल. राइट, नाउ इफ से A and B ने दो मैट्रिक्स कंसिडर करा एंड बोथ ऑफ देम आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, देन A into B and B into A both of them are also orthogonal. ठीक है, 17 में आओ, we have conjugate matrix. ठीक है, conjugate matrix किसको कहते हैं, अगर A bar is equal to ये J bar, I mean conjugate लेना. ठीक है, it's denoted by this, conjugate is basically denoted by this. Okay, now what does this mean is basically जो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, हम एक्सप्रेस करते हैं तो we express as this, right, and this is the imaginary part.
ठीक है. कॉन्जुगेट करना मतलब प्लस को माइनस करना, एंड अगर सपोज ऐसा है तो माइनस को प्लस करना. राइट. I'll give an example. Like suppose A is 1 plus I, 2I, 4, 7, 3 minus I, 2 minus 3I. Suppose ऐसा है. A conjugate का क्या होगा? I minus 1 minus I minus 2I, फिर तुम्हारा 4, फिर 7, 3 plus I, फिर 2 plus 3I. ठीक है. बेसिकली जो भी इमेजिनरी पार्ट के साथ है उसका साइन तुमको चेंज करना है. लेट्स सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज. इसका सम ऑफ द प्रॉपर्टीज देखते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज ए प्लस बी का कॉन्जुगेट अगर हम देखें ए प्लस बी कॉन्जुगेट फिर होल कॉन्जुगेट देखें तो इट्स ए कॉन्जुगेट प्लस सॉरी इसको बाद में देखते हैं. सो वी हैव okay, so we have a plus b conjugate, so we have a conjugate plus b conjugate. ठीक है. अगर a इंटू बी हुआ, सिमिलरली यहाँ पे अगर b के ऊपर कॉन्जुगेट होता तो यहाँ पे कॉन्जुगेट फिर b आ जाता. ठीक है. फिर a b कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a कॉन्जुगेट b कॉन्जुगेट. ठीक है. एंड k a कॉन्जुगेट अगर हमारे पास k कॉन्जुगेट k. ओके, सो एज आई वाज सेइंग, अगर तुम्हारे पास k इंटू ए है, सपोज k इंटू ए कॉन्जुगेट. ठीक है. एंड k तुम्हारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो. ठीक है. तो वी कैन राइट एज k कॉन्जुगेट k कॉन्जुगेट इंटू ए कॉन्जुगेट. ओके. इवन दो इफ इट्स नॉट अ मैट्रिक्स, even if k is not a matrix, we'll have k conjugate a because imaginary part है यहाँ पे. ओके. ओके. So moving on, 17. Moving on to the 18th part. We have transposed conjugate of matrix. Okay. Suppose we have a matrix and it's complex मतलब just shown you, right? ये जैसे ऐसे कुछ है. ठीक है. तो फिर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स. तो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स ए विल बी ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट. ठीक है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. मतलब पहले हम ए को कॉन्जुगेट ए का कॉन्जुगेट लेके फिर उसको ट्रांसपोज निकाल के जो भी वैल्यू मिलेगा दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम ए का पहले ट्रांसपोज निकालेंगे फिर उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तब ये क्या होगा, सेम होगा. ठीक है. ओके. मूविंग ऑन टू सम प्रॉपर्टीज. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज. ठीक है. इसको लेट्स से आई डिनोटेड ए थीटा. ओके. ए थीटा मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या फिर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. ठीक है. सो ए थीटा का थीटा मतलब ये फंक्शन को एक बार तुमने अप्लाई करा फिर दोबारा से सेम फंक्शन को अप्लाई करा तो ये है ए. देन अगर सपोज ए प्लस बी एंड देन यू आर अप्लाइंग द फंक्शन सो यू हैव दिस. देन अगर के इंटू ए. ठीक है. एंड थीटा. सो के कॉन्जुगेट इंटू ए, क्योंकि ये तो एक नंबर होगा ना, स्केलर. सो इट कैन नॉट हैव ट्रांसपोज, राइट. इसका कोई ट्रांसपोज ही नहीं होगा. सो इट विल बी दिस. ओके. सो देन अगर ए इंटू बी थीटा ऐसा कुछ है तो भी तुम ऐसे लिख सकते हो. ऑलराइट. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट विच इज द हर्मिशियन मैट्रिक्स. ठीक है.
इसमें क्या है कि सपोज तुमने एक मैट्रिक्स कंसिडर किया एंड दैट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो ए अगर ए आई जे से एन क्रॉस एन है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एन क्रॉस एन. नाउ इसका अगर हम ए आई जे जो है ये इक्वल टू है ए जे आई का कॉन्जुगेट, ठीक है. मतलब तुमने ये वाला मैट्रिक्स कंसिडर करा है ना, ए जो तुम ऐसे सपोज रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है. इस ए आई अगर ये ए आई जे जो है तुम्हारा ए जे आई के कॉन्जुगेट के इक्वल है, ठीक है, तो इसको इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हर्मे. तो ए को हम क्या बोलेंगे, हर्मेशियन मैट्रिक्स, ठीक है. ये जो एलिमेंट्स है ना इसको हम हर्मेशियन बोलेंगे एंड देन द मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हर्मेशियन मैट्रिक्स, ठीक है. कोई भी ए को हर्मेशियन होने के लिए, इफ़ आई से ए इज इक्वल टू हर्मेशियन, कोई भी ए को अगर हर्मेशियन होना है तो द कंडीशन इज दैट ए शुड बी इक्वल टू ए थीटा. थीटा तो एक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, राइट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स का फंक्शन है. सो ए शुड बी इक्वल टू ए थीटा एंड दिस इज sufficient, necessary and sufficient condition for any matrix A to be called a Hermitian matrix. Okay. and इसका एक चीज़ याद रखना कि जो डायगोनल है ना, डायगोनल ऑफ ये मैट्रिक्स, हर्मेशियन मैट्रिक्स, हमेशा रियल होता है, प्योरली रियल. मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा वहाँ पे. it won't consist of any imaginary number, it will be purely real. Okay, now 20 skew Hermitian matrix. तो स्क्यू में तो हमें पता है कि क्या चक्कर है, बस माइनस कर देना है प्लस का. सो सपोज यू हैव दिस, इट्स a square matrix suppose, right? it will be Hermitian if ये ए आई जे है ना, ये ए आई जे will be equal to minus of ए जे आई बार. सेम है, बस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है. ओके, एंड यहाँ पे सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ए थीटा शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए. ये कंडीशन इनफ है टू बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है. एक चीज़ याद रखना, एवरी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एंड लेट्स से इट्स ए, तो वो क्या होगा, इट विल बी हर्मिशियन प्लस स्क्यू हर्मिशियन. ओके, then moving on to 21 यूनिटरी मैट्रिक्स. ओके, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए है, ठीक है, एंड दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, सो ए है, इट्स ए आई जे, ठीक है. ये यूनिटरी तब होगा, सॉरी, दिस विल बी यूनिटरी if a into a theta which is थीटा मतलब इज़ अ फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट फंक्शन, ठीक है. ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इज इक्वल इंटू ए एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और आई कैन टेल ए थीटा इज इक्वल टू ए इनवर्स. इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ए विल बी अ यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है. फिर 22 इफ़ आई से उससे पहले लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज़, ठीक है. इसके प्रॉपर्टीज़,
अगर ए यूनिटरी हुआ, ए ट्रांसपोज भी यूनिटरी होगा, ठीक है। एंड ए इंटू बी अगर यूनिटरी हुआ तो ए इंटू बी भी क्या होगा, यूनिटरी होगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट वन विच इज़ द पीरियडिक मैट्रिक्स। ओके, पीरियडिक मैट्रिक्स में क्या है कि ए जो है ना, और ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, applicable only in square matrix. So A is a square matrix, so it should be equal to A to the power k plus 1. And what is k? K is some positive integer, alright. And least positive integer, इसके रेंज में, k के रेंज में जो least positive integer है ना, वही क्या होगा, वही होगा पीरियड ऑफ A, ठीक है। Now one thing you need to remember, if k is equal to I, for k is equal to I, say suppose a square is equal to a, then your a is equal to, मतलब इंटीजर, ठीक है, k is equal to इंटीजर, तो तुम्हारे पास a square is equal to a, अगर a square कर दो and then you get a, then a is your idempotent मैट्रिक्स। हमने पहले भी देखा था, है ना, हमने पहले देखा था कि नहीं, yeah, see, idempotent matrix. Okay, so this is the end of our types of matrices. Second, we will be moving on to algebra of matrices. Okay, we'll start with algebra of matrices in the next video.